इस वीडियो में हम जनरल कंसेप्ट्स ऑफ स्किन के बारे में कवर करेंगे। तो स्किन में एज वी नो दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कुछ रेफरेंस में इसे कंसिडर किया जाता है एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एज वेल। सो इस वीडियो में मैं आपको पहले स्किन के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और लास्टली मैं कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। सो स्टार्टिंग विद द फंक्शंस, वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आवर स्किन विच इज़ द बैरियर एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि द स्किन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव यूनिट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and UV radiations and various other factors. Apart from it, it has the function of the thermoregulation, that is to maintain the body temperature. अब ये कैसे होता है? It is due to the process of sweating. अगर बॉडी में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो फिर बॉडी does the sweating so as to cool down our body temperature, whereas अगर बॉडी का टेम्परेचर लो है then it starts shivering, that is due to which the body temperature rises. So in case of increase in our body temperature, the thermoregulation mechanism जिससे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, इसीलिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ समर वी मोस्टली यूज द फंक्शन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, जिससे ज़्यादा स्वेटिंग होती है बॉडी से. एंड देन वी हैव द सेंसरी फंक्शन in which we have the pressure, vibration, touch, pain, temperature. अब ये सारी चीज़ें क्या है? These are the types of sensations which our body can feel with the help of our skin. Next, we have the synthesis of hormone, that is the vitamin D. जैसे कहते हैं कि सुबह के टाइम सन से विटामिन डी मिलता है, देन इसका प्रोसेस जो है वो आप फिजियोलॉजी में जानेंगे, that we already have the inactive form of vitamin D present excess in our body, बट उसे कन्वर्ट करने का काम करता है दी सनलाइट, दी सन रेज, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दैट इनएक्टिव विटामिन डी इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी. तो इसलिए कहते हैं कि सुबह के टाइम बाहर सन रेज लेना अच्छा होता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड अदर वेरियस रीजन्स. देन वी हैव द फंक्शन दैट इज द मेलानिन सिंथेसिस. अब मेलानिन सिंथेसिस इज अ वेरी क्रूशियल बिकॉज इसका रोल होता है अगेंस्ट यूवी रेडिएशन. अब इसमें मेलानिन सिंथेसिस के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कंपेयरिंग टू कंट्रीज. दैट इज सपोज कीजिए हमने अफ्रीका की कोई कंट्री ले ली और कोई यूरोप की कंट्री ले ली, ठीक है. तो उसमें अफ्रीका की कंट्री में क्या है कि सनलाइट का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, एंड ड्यू टू विच द पीपल विच लिव इन दोज कंट्रीज आर नीग्रोस, दैट इज दे आर काले लोग होते हैं, दैट इज दे आर दी नीग्रोस. whereas in case of any European countries, these are mostly albinic, that is they are whitish, because इनमें मेलानिन का सिंथेसिस जो है वो कम होता है, whereas in case of these negroes they have high amount of melanin synthesis. So due to it we have the color difference which occurs in different countries and different parts of the world. It totally depends upon कि आप कितना रेडिएशन फेस कर रहे हो, उसके ऊपर बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं विच रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द मेलानिन. सो जो टर्म स्किन है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म दैट इज क्यूटिस. अब ये जो स्किन या फिर क्यूटिस है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द अपर पार्ट और द आउटर पार्ट विच इज़ द एपिडर्मिस, एंड द इनर पार्ट दैट इज द डर्मिस. सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल पार्ट, whereas जो डर्मिस है वो आपके मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है. एंड दीज आर द आउटरमोस्ट लेयर्स ऑफ दी सेल्स कवरिंग द एंटायर सेल बॉडी, कवरिंग द एंटायर बॉडी. एंड द डर्मिस इज द रीजन इन विच वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द नर्व एंडिंग्स, द ब्लड वेसल्स एंड द फॉलिकल्स विच कैन बी सीन हियर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव द अपर मोस्ट रीजन दैट इज द एपिडर्मिस, जो आउटर लेयर फॉर्म करती है स्किन की, और यहाँ पर पाया जाता है हेयर शाफ्ट, दैट इज द upper part of the or the apical part of the hair. Whereas in the dermis region, जो epidermis के नीचे पाया जाता है, we can classify again it into two parts, which is the papillary dermis, which is present on the outer side, and the reticular dermis, which is present on the inner side. इस dermis region में mostly हमारे blood vessels, nerves और muscles और बाकी के hair follicles, ये सारी चीज़ें पाई जाती है.
And lastly, we have the hypodermis. Hypodermis is the region which is present below dermis. As the name suggests, hypo means beneath and dermis this part of the skin. और इसमें adipose tissue पाया जाता है along with the sensory nerve fibers. The dermis is actually made out of the elastic fibers and the type 1 collagen. The next term which I want to introduce here is the skin appendage. Skin appendages यानी वो सारी चीज़ें जो स्किन में पाई जाती है, जैसे कि आपके हेयर फॉलिकल्स हो गए, जैसे ग्लैंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है, या फिर नेल्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं एज द स्किन appendages which are derived from the skin. यानी अगर एक्टोडर्मल पार्ट में है तो इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अगर मेसोडर्मल पार्ट में है देन इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन. Then we will discuss about the cells of the skin. In the cells of the skin, we have the most abundant, which are the keratinocytes. Keratinocytes, ये केराटिन सेल्स है. ये जो केराटिन प्रोटीन है वो आपके हेयर्स और नेल्स रीजन में पाया जाता है. So these keratinocytes are mostly located in the basal cells. अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में the layers of the epidermis, which are also known as the strata. Layers को ही हम strata कहते हैं. So ये जो केराटिनोसाइट्स है वो बॉटम लेयर में प्रेजेंट होती है ऑफ द एपिडर्मिस. ये जैसे आपकी स्किन हो गई, तो इसका जो सबसे बॉटम लेयर है दैट इज द स्ट्रैटम बेसाले, इसमें पाया जाता है द केराटिनोसाइट्स. एंड इट हैज़ द फंक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनवायरमेंटल डैमेज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन बाई स्टोरिंग द मेलानिन पिगमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. देन वी हैव द मेलानोसाइट्स. अब ये मेलानोसाइट्स जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेलानिन पिगमेंट इटसेल्फ. एंड these are present in the hair, the choroid of the eye, which is the somewhat bluish blackish part of the eye, which is present on the inner side. Then we have the stratum basale, as we discussed here, that is the basal cells. And then we have the iris, which is the black part of our eyes. And so we can say that melanocytes are involved in the melanin synthesis and storage. And lastly, we have the type of cells which are the Langerhans cells. These are present in the stratum spinosum. अब हम इन सारी layers को देखेंगे when we will discuss the layers of the epidermis. These are present in the stratum spinosum and they act as the antigen presenting cells. So we can say that these are involved in the immunity of our skin to prevent the bacteria from entering, and they express proteins such as the MHC class 2, FC receptors, S100, the CD1A. अब ये सारे जो MHC class 2, FC receptors, these are part of the antibody antigen complement system, जो important role play करता है when any microorganism enter in our body. So इसके बारे में आप physiology या pharmacology में आगे पढ़ेंगे. So moving ahead with the structure of the skin, we have the cutis, which is comprised of the epidermis and dermis. Epidermis जो आपके बाहर वाला पार्ट है और dermis जो अंदर वाला पार्ट है, और उसके अंदर है present the hypodermis. And it is also known as the subcutis region, that is present below the cutis. Subcutis, that is below the cutis. और इसके लिए एक mnemonic है जो आप याद रख सकते हैं for the layers of the epidermis. The mnemonic which is come on let's get some beer. तो ये जो mnemonic है, इससे आप epidermis के जो 5 layers present होते हैं वो आप याद रख सकते हैं. The first layer of the epidermis is the corneum. The second layer is the lucidum. ये सिर्फ आपके palm और शोल्डर रीजन में पाया जाता है, ये जो लेयर है stratum lucidum. Then we have G for granulosum and S for spinosum. और lastly जो basal layer है that is the basale. और जो structure of skin है it is present uneven in our body, that is कुछ region है जहाँ पर skin is present thick, whereas there are some regions such as in case of our eyelids in which the layers of the skin are thinner as compared to the other regions such as in hands and heels where they are thicker. So जो आपकी outer layer है in the epidermis we have the stratum corneum. अब ये जो stratum corneum है it is a type of a nuclear layer, यानी इसमें nucleus absent होता है, and it is made out of the keratinocytes. और ये जो keratinocytes है present in the corneum strata, these are known as the corneocytes. अब ये जो keratinocytes है ये इसके नीचे वाले लेयर यानी stratum granulosum से आते हैं, या फिर अगर ये in case of our hands and heels these come from the stratum lucidum. Since in case of hands and heels जो stratum lucidum layer है वो present होती है, whereas in any other region we have the presence of the stratum granulosum. Then ये जो desmosomes है ये connect करती है
through the walls of the keratinocytes, and in between it we have the presence of the matrix, which is the lipid part which is secreted by the lamellar bodies. अब ये जो lamellar bodies है, these are present in the stratum granulosum region, which is present just beneath the stratum corneum, and it acts as a barrier to prevent the entry of pathogen by maintaining a pH at around 4 to 5.5, which is an acidic pH, to destroy the growth of the microorganisms. और due to the और since ये जो layer है, it is continuously in contact of the environment, it also faces other damages, so इसीलिए इसका continuous shredding भी होता है. That is, ये जो upper layer है वो continuously remove होती है. Then we have another layer which comes off out after a day or two. फिर वापस से ये layer shred होती है. Then new layer comes in और वापस से ये process continuous होता है. So it is a nuclear layer which is present of the which has presence of the keratin filled cells or the corneocytes, and it is the outer layer and undergoes the process of shredding, that is removal of the upper layer continuously. And then we have the stratum lucidum. Stratum lucidum जो है, it is a type of thin layer which is found in the region of palms and soles. Next we have the stratum granulosum. ये जो granulosum है, as the name suggests, it has presence of some granules. So ये जो granules है, these are nothing but the keratohyaline granules. So यहाँ पर हम structure देख सकते हैं that we have the stratum granulosum. So I have drawn them in blue color, in which we have the keratohyaline granules and the lamellar bodies. अब जैसे हमने देखा, ये जो lamellar bodies है, ये secrete करती हैं lipids, which forms the matrix in case of the upper layer, that is the stratum corneum. और इसके नीचे, that is beneath the stratum granulosum, lies the stratum spinosum. अब ये जो stratum spinosum है, under the microscope it gives prickle like appearance या फिर spine like appearance, and it may also has presence of the keratohyaline granules, but it is not fixed in case of the stratum spinosum. So these are the prickle cells, keratinocytes, and are also connected via the desmosomes, which is connecting the adjacent cells with the help of the cell membrane, and forms the keratin, which is an important protein involved in the maintenance of the skin. And lastly we have the stratum basale. अब ये जो stratum basale है, it is the lowest part of the epidermis, और इसे stratum germinatum भी कहा जाता है because of the reason of presence of the stem cells. अब ये जो stem cells है, ये differentiate करते हैं in the formation of the keratinocytes, and as we can see, ये जो keratinocytes है in the region of the stratum basale, they will further go in the region of the stratum spinosum, then it will go in the region of the stratum granulosum, and lastly it will go in the region of the stratum corneum. और इस तरह shedding continuously होता रहता है. But until the point it reaches the stratum corneum, it is devoid of the nucleus. So it is an important point, whereas rest all layer, that is the stratum granulosum, आपकी stratum spinosum और stratum basale, इन तीनों में nucleus पाया जाता है, but in case of the stratum corneum it is absent. And apart from it, it has also the presence of the melanocytes, which are responsible for the synthesis of the melanin, as we discussed, and the Merkel cells. So the Merkel cells are the somatosensory receptors, which we will be discussing very soon. और इससे related ना एक clinical condition होती है, that is known as the epidermolysis bullosa. अब ये जो epidermolysis bullosa है, it is a rare genetic condition in which there is development of the blisters on the skin or the mucous membranes. So moving ahead, we have the hemidesmosomes. So ये जो hemidesmosomes है, these are present between the epidermis and the dermis region, and we also have the basement membrane. और ये जो basement membrane है, it is the region which is present below the epidermis and is connected to the epidermis via the hemidesmosome. So ये कुछ इस तरह होता है that the hemidesmosomes has the intermediary filament which connect the basal membrane or the basal lamina to the basal layer of the epithelial cells. और ये जो hemidesmosomes है, these are connecting with the help of intermediary filaments, which are in turn
a type of integrin.